The burned-out hulks of the two jumbos make very clear the extent of the human devastation. Many of the dead, they're with the remnants of passengers' personal baggage. The pictures can show this horror. They can't convey the stench of the dead, of the smouldering still of the two aircraft, a stench which hung over the airport long after the last flames had died and the last bodies had been removed. Once this task had been completed, the workers seemed, not surprisingly, to hardly know what to do. अटलांटिक महासागर के शांत आलिंगन में एक स्वर्ग जैसी माने जाने वाली एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इसकी सुंदरता देखने आते हैं। लेकिन क्या होता है जब प्रकृति की ताकतें इस करामाती जमीन पर अपना रोष प्रकट करती हैं? सिंपल भाषा में कहे तो तारीख 27 मार्च 1977 का एक ऐसा दिन जो विमान इतिहास की धारा को हमेशा तो समय था शाम के 5 बजे का, जब दो पूरी तरह से भरे हुए बोइंग पैसेंजर प्लेन KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 टेक ऑफ। Mayday, Thompson 253 Hotel, engine failure. We are continuing with northwesterly and then inbound towards Wallasey. Thompson 263 Hotel, roger. All runways available for landing. Surface wind 0, 72 degrees at 5 knots. Storybox Audio.